This is a second part of our podcast on the topic importance of career counseling in different stage of your life. In previous part, we covered the dilemma of students while choosing the career path, how financial situation matters while taking the right decisions, and the importance of professional career counseling. And now moving ahead with the part 2. Stay tuned. If we talk about the counseling, now we have seen that how admission can be clarified for a student in terms of taking the decision. What about the mindset of the students when they think that, oh, now I'm at a situation where I need to sit for the placement? जैसे आपके यहाँ पे भी काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपको देखकर कि आपके थ्रू जिन्होंने एडमिशन लिया, नाउ दे आर इन द थर्ड ईयर, और ऐसे जो आपके साथ डिस्कस करते होंगे, राइट? तो उस टाइम पे उनका क्या डिलेमा होता है? व्हाट आर देयर माइंडसेट एट दैट पर्टिकुलर स्टेज? या अब मुझे जॉब करनी है, या फिर बिजनेस ऑप्ट करना है, या फिर किसी पेरेंटल बिजनेस, सेकेंड जनरेशन है तो पेरेंटल ऑक्यूपेशन को ज्वाइन करना है, राइट? तो या फिर प्लेसमेंट में कितने सारे लोग आ रहे हैं, हाउ टू डू द जॉब, हाउ टू सिलेक्ट द जॉब, उसमें कैसा रहता है? सी अगेन, मतलब जिस ऑन सेम लाइंस आई वुड लाइक टू से, जैसे हमने एडमिशन के बारे में बात किया कि सही सही ब्रांच कौन सी रहेगी आपके लिए, उसके लिए जैसे आपने एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशंस की हेल्प ली, on same lines, once you enter the appropriate branch and after a due course of time, typically if you consider, let's say, engineering, right? So it's a 4-year undergraduate full-time course. So typically, let's say around when the student is in the 7th semester, मतलब final year में जब होता है, तो typically 7th semester से campus placement आना शुरू हो जाता है, right? तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अप टू 6 सेमेस्टर, not all but a majority of the students, they are more focused in getting more marks in whatever subjects they are undertaking, which is not wrong. मतलब अच्छे मार्क्स होने चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, but the point is, many times they are not aware कि when they come in the 7th semester and when companies start coming all of a sudden, so they find themselves caught unawares. मतलब वो एकदम, मतलब जिसको हम गुजराती में बोलते हैं कि ऊँघता जड़ पाया, तो अभी तक तो मतलब जैसे उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी तो हम सब ये सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे, अभी तो जस्ट आए और उतने में तो मतलब हमारा रिवोल्यूशन शुरू हो गया, राइट, बिफोर यू रियलाइज. तो उसमें आई वुड लाइक टू सजेस्ट ए फ्यू थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज दैट अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग द सब्जेक्ट्स, राइट, आपको मतलब यू शुड बी हैविंग सम डेमोस्ट्रेबल स्किल्स. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल्स. फॉर एग्जांपल, जैसे कोई साइकिल है, तो एक अच्छी साइकिल क्या होती है, साइकिल के टायर्स कैसे होने चाहिए, साइकिल का जो हैंडल होता है उसमें किस तरह का वार्निश लगा हुआ होना चाहिए, राइट? तो उस पर अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ अच्छा, एंड गेट इफ आई गेट 10 out of 10, देन यू कैन से कि मुझे साइकिलों के बारे में अच्छा नॉलेज है. लेकिन अगर मेरी साइकिल पंचर हो जाए एंड इफ आई एम नॉट एबल टू मेंड दैट पंचर, so then you can say that I do not have sufficient skills as far as managing cycles are concerned. तो मेरी नॉलेज तो अच्छी है, मैं 10 out of 10 साइकिल का ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन साइकिल में छोटी सी भी प्रॉब्लम हो या छोटा सा नट के बोल्ट टाइट करना है वो मुझे नहीं आता है. इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि इवन दो आई हैव गॉट गुड नॉलेज अबाउट साइकिल्स, आई डू नॉट हैव द नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर बीइंग कॉल्ड एज अ साइकिलिंग और एज अ साइकिल एक्सपर्ट, राइट? तो यही चीज काफी बार सब्जेक्ट्स में होती है. So students have got theoretical knowledge, they clear examinations, they get good grades, good marks, but they do not have demonstrable skills. जैसे मान लो कि भाई if some student is claiming himself to be a good Java programmer, so when actually he is presented with some practical problem, then within a reasonable amount of time he should be able to develop a good workable solution in that particular technology जिसमें वो अपनी expertise claim कर रहा है, right? अगर वो ऐसा कर सकता है तो हम बोलेंगे कि yes, he is possessing the necessary Java programming skills, right? तो ये एक मैंने ऑब्जर्व किया कि काफी बार स्टूडेंट्स के पास नॉलेज अच्छी होती है लेकिन skills are lacking, and one of the major reasons for that is that sufficient attention has not been paid in hands-on practice and laboratory exercises as far as students are concerned. This is one thing. तो इससे स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो जो भी ब्रांच में मतलब जो भी जॉब के लिए मतलब इंटरव्यू में मतलब when they go for that, तो if you do not have hands-on experience, right, in that case वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. That is one thing. Second thing, what I've observed is students normally know only the name of the subjects कि भाई मैंने ये पढ़ा है, subject X पढ़ा है, subject Y पढ़ा है. But when you go for the interview, that interviewer is not interested
in what subjects we have studied. Basically, he has got a set of job profiles या job description जिसको हम JD बोलते हैं. जैसे हम अगर IT फील्ड कंप्यूटर साइंस की बात करें तो typically once a student completes his BTech in computer science and engineering, so there are various kinds of job profiles available. For example, he could go for something called as a developer or a full stack developer. He could go for software testing and quality assurance. He could go for, let's say, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स. काफी बार मतलब जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनके सेल्स के लिए भी यू रिक्वायर पीपल के हु आर टेक्निकली क्वालिफाइड, एट द सेम टाइम दे शुड बी हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लिटिल बिट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स आल्सो. तो उस टाइप का एक स्किल सेट का कॉम्बिनेशन चाहिए. तो काफी बार इस तरह के भी मतलब जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल होते हैं. Then again, there are job profiles which are purely hardcore skills like developing operating systems and compilers and so on. तो काफी बार स्टूडेंट्स को क्या है कि ये अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के बारे में नहीं मालूम होता है, इंक्लूडिंग देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसईओ. ओके, तो भाई आजकल स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग और उस सब में एसईओ का काफी इंपॉर्टेंस है. तो देयर आर मतलब जॉब प्रोफाइल्स कंसर्निंग एसईओ, वेबसाइट डिजाइन, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट. तो अभी ये सब में से आपको किस में इंटरेस्ट है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अवेयर कि इस तरह के जॉब प्रोफाइल्स है, राइट. तो काफी बार स्टूडेंट्स को ये जॉब प्रोफाइल्स के बारे में मालूम ही नहीं पता होता, वो मालूम ही and they नहीं end होता. up by whatever is offered in the platter and they choose one from it. ये mindset से शायद वो लोग जा रहे हैं, right? एग्जैक्टली. तो ये मतलब एट दिस जंक्टर ऑल्सो अगेन मतलब सबसे पहले तो देयर आर थ्री ब्रॉड चॉइसेस. either he can go opt for further studies after completing his graduation, second is he can opt for campus placements, and third is he or she they can go for entrepreneurship, right. तो पहले तो उसके लिए भी काउंसलिंग होनी चाहिए. हाँ, मतलब लाइक उसमें वो एक्चुअली कैपेबिलिटीज, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटरप्रेन्योर तो इट्स अ होल पैकेज. You cannot just be an entrepreneur with one skill expertise, you can't right? become an entrepreneur by attending a seminar on entrepreneurship, right. ये भी काफी बार मैंने देखा है बच्चों को, just because एक दो सेमिनार अटेंड कर लिया या एक दो बुक्स पढ़ ली, तो बुक्स पढ़ के सेमिनार्स अटेंड करके सी seminars can expose to you the different schemes which the state government or central government is running to promote entrepreneurship, right. वो अच्छी बात है कि आपको पता है कि इतनी स्कीम, बट उस मतलब वो जानकारी लेने से आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन गए, वो मतलब ऐसा नहीं है. सही बात है. एंड सेम गोज विद अगर आप जॉब प्रोफाइल में से कुछ एक सिलेक्ट करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जॉब डेजिग्नेशन इज सो ल्यूक्रेटिव ना, तो यू गेट अट्रैक्टेड टू इट. यार आई वांट टू बी एन मैनेजर, बट देन मैनेजर के साथ में जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच्ड है उसमें अगर आपकी स्किल नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड इन दैट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड फॉर द पर्टिकुलर डेजिग्नेशन. If you are not understanding the responsibilities associated with the designation, then also it is going to give you a इससे फिर एंड में moral down होता है. Actually, I would like to cite an example here again. Around 15-20 years back in one of my previous institutes, so there was one girl and she was quite good in her academics. So academics में काफी अच्छी थी. She used to be a ranker और एक दो बार तो पूरी यूनिवर्सिटी रैंकर भी बनी थी. And afterwards she came in when she was in her third year. At that time, campus placements started coming, and she started attempting in various companies. But unfortunately, she didn't used to get selected. तो उसमें programming या development oriented jobs भी आते थे, right? दूसरे भी job profiles के jobs आते थे. But somehow she didn't used to get selected. So she got somewhat disheartened. Then I observed that sadness and depression in her. तो एक बार ऐसे ही मतलब I just asked her that कि भाई और gradually उसका performance भी कम होने लगा. So I just called her one day and I just discussed with her in a very friendly way that we would like, and we in that institute also we had got one system of students counseling. So me along with a couple of other faculty members हमने वो student को बुलाया and we shared our observation कि भाई हम देख रहे हैं कि भाई पिछले सेमेस्टर से you are quite down, आपका परफॉर्मेंस भी पहले ऐसा नहीं रहा, राइट. तो शी शेयर्ड कि सर मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, मेरा मतलब मैं इतनी अच्छी एकेडमिक्स में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. तो व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, राइट. तो फिर मतलब आई यूज्ड टू ऑब्जर्व हर. फिर मैंने उसको शेयर किया. आई हैड अ सेशन विद हर एंड आई सेड दैट सी बेसिकली नथिंग इज रॉन्ग विथ यू, यू आर अ गुड स्टूडेंट, बट सी just because you are getting good marks in certain subjects that does not mean that you are good in those technologies. क्योंकि जब मैंने देखा कि as far as laboratory exercise are concerned, तो लैब में आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था कंपेयर टू सर्टेन अदर स्टूडेंट जिनका रैंक नहीं आता है, लेकिन जब उनको कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम बनाने को देते हैं तो विद इन 10 minutes दे आर रेडी विद द प्रोग्राम एंड यू यूज्ड टू स्ट्रगल विद दैट, राइट.
तो फिर मैंने उसको समझाया, बट ऑन दी अदर हैंड जैसे एक बार कोई इवेंट होने वाला था, तो शी वॉज एबल टू ब्रिंग स्पॉन्सरशिप वर्थ 2 लाख रुपीज फ्रॉम सम पर्टिकुलर एजेंसी, राइट? तो मतलब मैंने उसमें देखा कि शी हैड गॉट लॉट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, प्लस हर हर कम्युनिकेशन स्किल्स, हर इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, हर कन्विंसिंग स्किल्स, दे वर क्वाइट गुड। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि सी, काफी कंपनीज, अच्छी कंपनीज में ऐसे जॉब रिक्वायरमेंट है वेयर दे बेसिकली रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सो सेमी टेक्निकल काइंड ऑफ जॉब। तो वहां पे ऐसा था कि शी जॉइन दैट, मतलब आई सजेस्टेड हर टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट कॉल्ड एज टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन राइटर। मतलब वो कंपनीज, those that company was manufacturing firewalls. Firewall is one kind of a security device, so they were manufacturing firewalls. तो firewalls का भी documentation, elite core करके कंपनी, शायद you might be aware, there was a very famous company called as elite core technologies, और cyber room करके firewall आता है। अभी वो बंद, मतलब अभी it has been discontinued। अभी that company's name is Sophos Technologies। पहले उसका नाम cyber room था, वो प्रोडक्ट का नाम cyber room हुआ करता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 10-15 years बैक। ओके। तो उस वक्त अहमदाबाद बेस्ड कंपनी थी, तो आई सजेस्टेड दैट स्टूडेंट दैट यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। वो पोस्ट में उसको वो साइबररोम के जो प्रोडक्ट्स थे उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना था। तो इट वाज नॉट अ हार्ड कोर टेक्निकल जॉब। तो शी ऑल्सो गॉट क्वाइट फैसिनेटेड। शी अपियर्ड फॉर द इंटरव्यू एंड शी गॉट सिलेक्टेड, एंड आफ्टर 1 or 2 years आई फाउंड दैट on that basis she had joined another big company and she went to US just as a technical documentation writer in some very reputed company। Oh, great. तो मतलब यहाँ पे, मतलब अगर वो काउंसलिंग उस वक्त वो लड़की की नहीं हुई होती, सी आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक पैट माय बैक एंड टेक द क्रेडिट फॉर दैट। वो मैंने काउंसलिंग की, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉइंट ये है कि ये काउंसलिंग किसी ने उसको किया, somebody counseled her and somebody pointed out to her that कि आप गलत जगह पे मतलब अपना सर सर डाल पटक रहे रहे हो, हो, या राइट? तो you are putting your efforts in a wrong avenue, and I think this is the problem with not 10-20, more than 80% of students, 100%. नहीं, 80% of people, Yes, yes, very they are true. they are not aware that what they are meant for। अगर ये काउंसलिंग शायद कहीं पहले उनको मिली होती, तो most of the people would be excelling well with see, I am not saying that by doing this you need not work hard। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। तो काफी जगह पे क्या होता है कि सिंस आप गलत जगह पे ये कर रहे हो, मतलब यू आर इन अ रॉन्ग फील्ड, इसीलिए आप इतने सारे एफर्ट्स पुट अप कर रहे हो, फिर भी वो कर्व वैसा ही है, मतलब एफर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन वो ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, राइट? दैट कर्व इज हॉरिजॉन्टल ओनली। I think this is a major reason. So getting timely professional advice, right? It's very I think that important. is critical for you। और उसके लिए if you have to shell out a few bucks, I don't think it's a bad deal, right? Right. See, ये again मैंने observe किया है, ये अपना human psychology है, all of us are included। We are ready to spend any amount for getting entertained, but we are not ready to spend for getting trained। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक्चुअली दिस इज अ वेरी नाइस लाइन। बट अगर इस चीज को डीपली समझे ना, तो हम आई एम फेसिंग दैट प्रॉब्लम के इफ आई से दैट आई चार्ज दिस मच बक्स फॉर माय वन सेशन, देन डिसाइड कि यार, मतलब वो क्या होता है ना, कभी कभी वे सोसाइटी में बैठ के एक एडवाइस ले ली एंड यू मेक योर करियर चॉइस ऑन दैट। बट that advice whosoever has given you, he has definitely not given you the wrong advice, but on what circumstances, on what situation you have asked for it, all those things matter a lot in taking one decision. Exactly, right? I will share one interesting example। I was taking one course, एक नया कोर्स मुझे दिया गया था, उसके बाद I suggested a few books to my students कि देखो स्टूडेंट्स, ये बुक बहुत अच्छी है, ये बुक। तो सडनली स्टूडेंट्स स्टार्टेड आस्किंग मी द प्राइस ऑफ दैट बुक। मैंने कहा कि भाई वो अराउंड 500-600 रुपीज की बुक है। तो इमीडिएटली स्टूडेंट्स टोल्ड कि सर आपके पास कॉपी है तो हम जेरोक्स निकलवा दें, राइट? तो अब इसमें क्या है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ जेरोक्स, दैट मीन्स यू आर एडवोकेटिंग पायरेसी इन अ वे, यू आर वायोलेटिंग डिजिटल कॉपीराइट्स। तो जो ऑथर ने मेहनत करके वो बुक बनाई है, उसको ही इज गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट रॉयल्टी। तो मैंने वो बच्चों को समझाया कि बॉस, अगर ये आप बुक लेते हो, 500-600 रुपीज की बुक है, राइट? उसके सामने आई आस्क दैट गाय कि आप होटल में कितने बजे कितनी बार जाते हो वीक में? तो बोले 15 दिन में एक बार तो डोमिनोज पिज्जा विजिट। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, बट पॉइंट इज you are ready to spend more than 1,000 rupees on a one time pizza, but you are not ready to spend 500 rupees on a book कि जो शायद फ्यूचर में आप हर महीने 50,000 कमा सको, उसके रिस्पॉन्सिबल बने। yes, yes, उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो आई थिंक दिस इज अ रियली रियली very sorry, very sorry state of mindset, basically I will say that we are not ready to
get trained, we are not ready to pay people they deserve for getting some expert advice, right? तो वो थोड़ा अगर हम mindset change करें, तो I think we can, मतलब it can really help a lot. Right. rather than keeping on struggling on our own, right? तो on same, जैसे मैंने admission के लिए तो placement के लिए भी I would say that you should definitely take professional advice. See, it is not just about selecting a proper job profile or a proper company. It includes a plethora of services when you go for this kind of professional counselors, right? So they help you in how to crack an interview, how to prepare yourself for an interview. They groom Yes. you, including how your dressing should be, how your verbal and non-verbal communication should be, right? They guide you in not only preparing a good resume, but how to answer questions in an interview. And not only that, in general, how you can enrich your profile. मतलब आपका प्रोफाइल देख के सामने वाला सेट हो जाए, right? तो Yeah. वो कैसे मतलब आपको करना है, तो ये सारी सर्विसेज आपको प्रोफेशनली ट्रेन किए जाते हैं Yeah, ये सब here चीज के I would लिए. like to highlight one thing. I also conduct this kind of job ready programs, Great, great. where I actually personally look into it, what is the core expertise of that particular student is. Okay. I make him aware about what the market trend is, right? Yeah. And what are the things that he or she should include in the CV, Great. how to develop the network connections and how to be presentable in those kind of interviews where you can get selected. So I include many more much things in this kind of programs. Right. बट द थिंग इज कि आजकल इंटरनेट पे काफी सारी चीजें ऐसी अवेलेबल है जिसकी वजह से पीपल थिंक जस्ट लुकिंग एट फ्यू वीडियोस एंड जस्ट surfing on the internet I can get through all these things, but it is practically not possible. Why I'm saying this is, Yes. when you talk about the written skills and the communication skills, you need to be very much aware about what to speak, how much to speak. Exactly. Right? तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है. Exactly. Here I would like to add that at times the student's background also plays a very important role. See, basically अगर हम compare करें, एक तरफ एक स्टूडेंट है, दोनों दोनों मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है. एक स्टूडेंट है, उसके फादर जनरल मैनेजर है ओएनजीसी में, और दूसरा स्टूडेंट है, उसके फादर जैसे मान लो कोई रिक्शा ड्राइवर है. दोनों के 90% है, राइट? नाउ दैट फेलो whose father is a general manager in ONGC, he is having an advantage. Why? Because since his father or his dad is in a managerial position, तो काफी सारा ग्रूमिंग या काफी सारा एडवाइस उसके फादर इफ ही वांट्स तो वो उनके फादर शेयर कर सकते हैं. यहाँ पे सामने वाले एंड पे क्या है, दैट पुअर गाय जिसके 90% है एंड हुज फादर इज बेसिकली रिक्शा ड्राइवर, तो यू वुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि उस तरह का एक्सपोजर, राइट? सी आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट डाउन एनी प्रोफेशन, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव इज मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि वो जो सेकंड वाला केस है उसमें वो स्टूडेंट शायद टेक्निकली कितना भी अच्छा क्यों ना हो, but since he is not aware about certain good practices, or since he is not groomed, and there is nobody in his family who can basically guide him on those aspects, right? So basically he needs these services more. Yes, and Right. adding to this, I also feel, because I have faced these things, you should not get hesitated in enrolling this kind of programs. Exactly, Because exactly. this is where where you are going to get enhancement of your skills. You can Exactly. get brush ups, you can get You should never hesitate for crying for help. of course. So, and especially when there are people around who are quite dependent, Yes. right? So I don't think so. Getting help is a bad thing. It's a good thing. And in fact, rather than taking decisions on your own and getting more and more trapped and frustrated at the end, I think it's better to take This a can also save timely. your time actually. Exactly. Because in career, time is very important. If you lose Yes. 1 year, then it's a big thing that you are Yes. losing. Yes. And see, always see, I see, even in case of let's say hospitalization or medical treatment, so we always take second opinions, right? Yes. We visit at least 2 to 3 or 4 expert doctors. So why can't we do this for our own career? Own career, yeah. So you should definitely take advice, take help of professional people. Again, finally, you are the principal and you are supposed to decide what is to be done. But I don't think there is anything wrong in getting help and getting, I can say, valuable information and suggestions from people who are already in the trade, right? True. तो जैसे मैंने फाइनेंशियल हेल्प का पहले एग्जांपल दिया कि अ पर्सन हु इज 24 आवर्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक्स is definitely more knowledgeable than me, right? Who is seeing the prices of stocks once in a month, Of course. right? Or just because on the basis of perceptions, right? Or somebody told that XYZ company is good, so I will invest in that. No. So when I visit that person, he will be giving me more sound information and advice. Yeah, in my consultation for the business, I always Yes. say, everyone is having some core expertise. Yes. And I believe if you brush up those core expertise on a regular basis, you can
definitely excel, and always, you can give a better performance in that particular area of Yes, expertise, right? yes, But in which where you are somewhere medium or lower, then there is no harm in taking expert advice from that particular person exactly, who is expert in that advice, right? exactly, Similarly goes with the professional part, at the time of placement, at the time of job, at the time of business, exactly. everywhere this goes in the same line. Yes, and see, one more nice development which I have seen is that is the introduction of this NEP or New Education Policy 2020. Now, one interesting observation which I have seen is that a lot of importance is given of tutoring students in their mother tongue. आपको अपनी मातृभाषा में ही पढ़ना है. See, if you observe certain countries, you take France, you take Japan, you take China, right? You take Russia, you take Germany. All these countries, ये सब countries में एक चीज common है. You take Japan, ये सारी कंट्रीज में वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम एंड एवरीथिंग इज इन देयर लोकल लैंग्वेज, Local राइट. language. इससे क्या होता है कि स्पेशली इफ यू कंसीडर द रूरल इंडिया, आज भी अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बिलोंगिंग टू रूरल इंडिया, राइट. और काफी सारे गवर्नमेंटल पॉलिसीज या जो हर्डल्स एंड इश्यूज भी जो है वो इंडिया का जो रूरल सेक्शन है उसको ध्यान में रख के मतलब किया जा रहा है. तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस एनईपी, ओके, ये जो नया एक ये आया है मतलब लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने वाली जो बात आई है, तो उससे एक ट्रांसलेशन का एक पूरा लेवल कम हो जाएगा. तो मेनी टाइम्स आई हैव ऑब्जर्व्ड that students, especially from rural region, they have got excellent ideas and they are conceptually very sound, but just because they are not able to speak English well, okay. So that's the reason that at times they were considered to be not to be at par with another guy just because he was able to say good English. That's why he was. So we need to understand the difference between being smart or having a nice personality and being technically sound. Yeah, There is a difference concept between that. clearance is very important. Exactly, exactly. एंड यार So उसमें कोई दो राय नहीं है. इफ यू आर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट एंड उसमें अगर आपको आपकी मदर टंग या फिर नेशनल लैंग्वेज में अगर आपको पढ़ना या लिखने से आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, then it is yes, a very good part. ना अल्टीमेट थिंग इज व्हाट दैट यू आर गेटिंग थरो ऑन अ टॉपिक. yes. तो मतलब ये पॉइंट ये मैंने इसीलिए रेज किया है कि स्कूल या कॉलेजेस जो है उनके लिए तो गाइडलाइन सेट की गई है, बट स्पेशली फॉर काउंसलिंग बॉडीज, तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि देर इज अ हिडन मैसेज इन एनईपी 2020, तो विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. तो अगर ये आपके लिए भी अगर एप्लीकेबल है तो आई थिंक इट कुड बी नाइस. Point is that the government, the state government, central government, and the rural bodies, they have all basically set up various thrust areas. इंडिया का जो नेक्स्ट 5 ईयर के 10 ईयर का जो प्लान है, राइट, तो काफी सारे थ्रस्ट एरिया सेट किए गए हैं कि भाई जैसे रोबोटिक्स है या स्पेस स्पेस इंजीनियरिंग है, राइट. तो मेनी थ्रस्ट एरियाज हैव बीन लेड डाउन बाय द प्लानिंग कमीशन, जिसको पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे, अभी इसको हम लोग नीति आयोग कहते हैं. तो नीति आयोग ने काफी सारे थ्रस्ट एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं. तो coupled with this concept of teaching in vernacular language, so that includes counseling in vernacular language also, and along with this help of these thrust areas, I think you will be able to provide better counseling to students that which branches should be taken. और दूसरा ये कि आप इनको ये भी बता सकते हैं कि there are many emerging branches which are quite relevant to the present problems of India. Yes, No, of course. मतलब apart from the conventional things like electrical engineering and mechanical engineering, right? There are many we can see emerging and innovative branches, right, which are quite applicable to India. जैसे मैं आपको बताऊं कि आजकल एक काफी ट्रेंड चला है मासिवली ओपन कोर्सेज, मूक कोर्सेज का मतलब क्या है, जैसे मान लो बेसिक मैथमेटिक्स है. नाउ वी डू नॉट हैव दैट मेनी टीचर्स और दैट मेनी पीपल के गांव गांव जाके मतलब बच्चों को पढ़ाए, या इवन अगर हम एडल्ट एजुकेशन की बात करें तो बड़े लोगों को भी पढ़ाए. तो व्हाट वी कैन डू अ फ्री टेलीकास्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट. तो दे आर ओपन कोर्सेज मेंट फॉर एवरीबडी. तो थ्रू द इंटरनेट, थ्रू रेडियो और थ्रू टेलीविजन, दिस कोर्सेज कैन बी टेलीकास्ट, ओके. Yes, yes. तो बेसिकली मतलब ये जो थ्रस्ट एरियाज है, अगर थ्रस्ट एरियाज को हम लेके उस हिसाब से वो कोर्सेज और मॉड्यूल्स अगर डिजाइन किए जाए, और वो कोर्सेज में एडमिशन लेने का काउंसलिंग अगर काउंसलिंग एजेंसीज करे, राइट, अरे हाँ. तो नेशनल लेवल पे जो एजेंडा सेट किया गया है गवर्नमेंट We ने, can तो achieve वी it कैन on a कंट्रीब्यूट faster आवर basis. वेट Yes, इन yes. अचीविंग दैट नेशनल एजेंडा True, true. and fulfilling those requirements of the thrust areas which have been identified by the government and the नीति आयोग. तो आई थिंक तो मतलब माइक्रो लेवल मतलब एक मैक्रो लेवल पे, राइट, हम जो भी एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, वी कैन अलाइन आवर एक्टिविटीज विद आवर नेशनल इंटरेस्ट्स. True, true, true. And I actually personally feel sometimes,
I want to contribute to this kind of thing. So, I Yeah. have also associated with few NGOs who are Okay. actively participating in this Yes. kind of activities. तो वहाँ पे हम लोग काफी सारी चीजें ऐसी लेकर आ रहे हैं कि जहाँ पे हम रूरल में पढ़ने वाले बच्चों को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं along with these schemes and the what governments are doing. तो ये सब चीजों को मर्ज करके आई फील कि इट्स अवर core responsibility of Exactly. everybody in our for our nation कि we Exactly. should do something or the other. देखो हर कोई काउंसलर नहीं बन सकता है, हर कोई टीचर नहीं बन सकता है ना? बट आप जो हो, अगर उस प्रोफेशन में भी आप जस्टिफिकेशन Yes. देके लोगों को राइट गाइडेंस देते हो, तो वी कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट. Exactly. So I think you will be doing a great service to the society and to the industry as well by providing the right kind of counseling to students, identifying their capabilities and interests. And if those students, मतलब future students, if they end up taking admissions into those branches for which they are meant for, so that itself is a big national service, right? Yes, and So मतलब like in result will be very good. exactly. So in future, the kind of workforce which will get developed, they will be though that workforce will be by choice and not by compulsion. Yeah, that's why I think government has declared that government is actually promoting that Yeah. their counseling is very important for Yes. and it has been mandate. Okay, now Yes. everyone should go for the counseling. Exactly. Yeah. So I see a big role for counseling agencies also to counsel students in a proper manner, and these things are applicable not only for students taking admissions or students who are in their pre-final or final year and looking for placements. In general, I think counseling or at least professional counseling, that is applicable even for experienced people also. For example, especially people who are thinking of career switches, right? So even in those cases also, I think if you take professional advice, then Yes, of accordingly course. you can prepare your resume in such a way, you can highlight your achievements and your profile in such a way so that the probability of getting selected in that switched area increases, right? Here I would like to add on one more thing, that this not only help the people like by through this counseling, when people comes to me for this kind of stage, I have seen that relief on their face, that okay, matlab, this also reduces the number of depression, mental health patients, because this kind of counseling also help them to be very clear on their agenda what actually they want to do. Because at certain age when you are having a responsibility of family and society, you cannot take a quick decision of changing the career. At that time, this counselors like us can support you to go in a right way, in a proper structured way, so that you can balance both the things in a Yeah. way. Yes, definitely. So yes, I think we should conclude this, Yeah. right? Would you like to conclude in your way if you want to add on in a conclusion? Yeah, just I would like to say that in this session, we have tried in our own way to highlight basically the importance of getting help, or to be more specific, getting professional counseling, okay, as far as getting admissions is concerned, or getting placements is concerned, or even if you are not a student and if you are a professional, if you are thinking of career switching, right? So getting professional counseling could, I think, play a very major and an important part, right, in taking a right decision at the right time and ultimately proving those decisions to be effective. So I Yeah. think I would definitely encourage students to identify, to take professional help, professional counseling, identify their areas of choice, that which for which branches they are suitable, their interests and their capabilities are suitable, and accordingly, I think they should take decisions. Right. And I would also like to thank you for sharing this Yeah, immense same knowledge here. for about the counseling and Same your here. experience, So right? yeah, I feel privileged that whatever little I know, I could share it with you and with the students, right? Right. And And here I would like to add on to my audience that if you feel that overall from this session, if you feel that there is something which you feel which is not being covered by us, you can definitely mention your questions in the comment box. We will be answering them personally, right? yeah, And yes. So students are most welcome if they have got any queries, any doubts in their minds, they can definitely communicate with us, and we'll be trying to resolve your queries and help you out. sure. So thank you so much, Yeah, thank and you. thank you everyone for watching Thank this.